हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। आज हम कवर करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का डेली डोज 4। इसमें हम 50 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। हम वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस की भी वीडियो बना रहे हैं, उनकी भी हमने 3 वीडियो बना ली है, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 150 तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है 151 से अट्रैक्ट, आकर्षित करना, टू पुल और ड्रॉ समवन और समथिंग टुवर्ड्स देम बाय द क्वालिटीज दे हैव, स्पेशली गुड वंस। सिनोनिम इज फैसिनेट, मोहित करना, एंटाइस, लुभाना, इंगेज, लगना। एंटोनिम इज रिपील, पीछे हटना, पीछे हटाना, डिटेल्स, बाधक, रिपल्स, प्रतिरोध करना। नेक्स्ट इज ऑडियस, ऑडेशियस एडजेक्टिव, इसका हिंदी अनुवाद होता है साहसी, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। सिनोनिम इज बोल्ड, साहसी, डेयरिंग, साहसी, ब्रेव, वीर, करेज, साहस, cheeky, मुंहफट। एंटोनिम इज कोवार्डली, कायर, टिमिड, डरपोक। नेक्स्ट इज ऑडेसिटी, जिसका हिंदी अनुवाद है धृष्टता, द विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, रूड और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। सिनोनिम इज बोल्डनेस, साहस, अनएक्सपेक्टेडली, अनपेक्षित रूप से, नर्व, साहस। एंटोनिम इज कॉर्डाइस, कायरता, टिमिडिटी, डरपोकपन, पोलाइटनेस, विनम्रता, जेंटिलिटी, शिष्टता। नेक्स्ट इज ऑगमेंट, ऑगमेंट, बढ़ाना, मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट या इंक्रीज। सिनोनिम इज इनहांस, बढ़ाना। एंटोनिम इज डिग्रेड, गिरना, गिराना, डिक्रीज, घटाना या डिमिनिश, कम करना। नेक्स्ट इज ऑस्पिशियस, शुभ, कंडक्टिव टू सक्सेस, फेवरेबल। सिनोनिम इज फेवरेबल, अनुकूल, फॉर्चुनेट, भाग्यशाली। एंटोनिम इज अनलकी, बदकिस्मत, ओमिनियस, अशुभ। नेक्स्ट इज ऑस्ट्री, ऑस्ट्री का हिंदी अनुवाद है सादा, सख्त, सीवर और स्ट्रिक्ट इन मैनर, एटीट्यूड और अपीयरेंस। सिनोनिम इज स्ट्रिक्ट, कठोर, अनअडॉर्न्ड, सादा, स्टर्न, कड़क, सौम्बर, गंभीर। एंटोनिम इज जुनाइल, मिलनसार, लग्जूरियस, विलासितापूर्ण। नेक्स्ट इज ऑथेंटिक, विश्वसनीय, इसका हिंदी अनुवाद है ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑरिजिन, जेन्युइन। सिनोनिम इज सर्टेन, निश्चित, जेन्युइन, वास्तविक। एंटोनिम इज फॉल्स, असत्य, फेक, नकली, डिसअप्रूव, झूठा ठहराना, करप्ट, दूषित, फॉल्सिफाइड, झूठा। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी, स्वराज्य, द राइट और कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सिनोनिम इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। एंटोनिम इज डिपेंडेंस। नेक्स्ट इज अवर्जन, घृणा, a strong dislike or disinclination. Synonym is dislike, नापसंद, hostility, शत्रुता। Antonym is attractive, आकर्षण, liking, पसंद। Next is avoid, बचना या टालना, keep away from or stop oneself from doing something. Synonym is evade, टालना। Antonym is meet, मिलना, seek, खोज। Next is awful, खराब, very bad or unpleasant. Synonym is terrible, खराब। Antonym is wonderful, अद्भुत। Next is awkward, बेढंगा, causing difficulty, hard to do or deal with. Synonym is clumsy, अनाड़ी, unskillful, अकुशल। Antonym is convenient, सुविधाजनक, graceful, गरिमापूर्ण, clever, चतुर। Next is baffle, baffle means चकित, चकित करना, to be bewilder or perplex someone. Synonym is puzzle, पहेली, perplex, उलझन में डालना, amaze, आश्चर्यचकित करना, confusion, भ्रम। Next antonym is composed, बेफिक्र, comprehensible, समझने योग्य, enlighten, जागरूक करना, facilitate, सुगम बनाना। Next is banal, तुच्छ, so lacking in originality as to be obvious or and boring. Synonym is commonplace, सामान्य, indigenous, सरल, mundane, सांसारिक। Antonym is novel, नवीन, sharp, तेज। Next is bane, अभिशाप, a cause of great distress or annoyance. Synonym is curse, शाप,
boon वरदान. Next is banter, विनोदपूर्ण गपशप, हंसी मजाक. The playful and friendly exchange of teasing remarks as a verb to exchange teasing remarks. Synonym is repartee, हाजिर जवाबी. Antonym is praise, प्रशंसा. Next is barbaric, क्रूर, निर्दय, severely cruel, exceedingly brutal. Synonym is uncivilized, rude, brutal. Antonym is civilized. Next is bare, nanga, no cloth or not covered. Synonym is basic, मूलभूत. Antonym is covered, ढका हुआ. Next is barren, branch of land too poor to produce much or any vegetation. Synonym is unproductive, अनुत्पादक. Infertile, बंजर. Desolate, जड़ा हुआ. Unfruitful, फलहीन. Fruitless, निष्फल. Antonym is fertile, उपजाऊ. Next is barrier, बाधा, a fence or other obstacle that prevents movement or access. Synonym is bound, सीमा. Antonym is opening. Next is beautiful, the pleasing in the sense or mind aesthetically. Synonym is handsome. Antonym is ugly, blemish. Next is beguile, धोखा देना. To charm or enchant someone, sometimes in a deceptive way. Synonym is deceive, छल करना. Antonym is honest, ईमानदार. Next is belligerent, लड़ाकू, hostile and aggressive, engaging in war or conflict, warlike. Synonym is hostile, सत्यतापूर्ण. Antagonistic, विरोधी. Contentious, विवादास्पद. Antonym is pacifist, शांतिवादी. Next is benediction, आशीर्वाद, the utterance of a blessing, especially at the end of a religious service. Synonym is blessings, आशीर्वाद. Antonym is criticism, आलोचना. Next is beneficial, लाभदायक, favorable or advantageous, resulting in good. Synonym is advantageous, लाभकारी, helpful, सहायक, harmful, हानिकारक. Next is benevolence, भलाई, the quality of being well-meaning, kindness. Synonym is kindness, दयालुता. Compassion, करुणा. Antonym is cruelty, क्रूरता. Acrimonious, कटुतापूर्ण. Next is benevolent, परोपकारी, well-meaning and kindly. Synonym is kind, दयालु, generous, उदार, gracious, कृपालु, compassionate, करुणामय. Antonym is malevolent, दुर्भावनापूर्ण, merciless, निर्दयी, stingy, कंजूस, selfish, स्वार्थी, misery, कंजूस. Hello everyone, welcome to the IS/IPS Factory. Today we are going to discuss English vocab from blackbook. तो इससे हम कंप्लीट कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स. आज का हमारा डेली डोज 3 है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो चलिए शुरू करते हैं. 200 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ स्टार्ट फ्रॉम 201. A person who gains as a result of something is beneficiary, लाभार्थी. Defeat, deprived और deprived of और lacking of something, वंचित होना. इससे देखो एक चीज और याद रखना, deprived के साथ of जो है preposition आता है. इस तरह से हम अपना सिलेबस डिवाइड कर सकते हैं कि किसके साथ कौन सा preposition आता है. कुछ फिक्स वर्ड्स के साथ फिक्स preposition ही आते हैं जो आपके एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत काम आएगा. नेक्स्ट इज beverage, पेय पदार्थ, एंड सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर. नेक्स्ट इज वेवी, झुंड. A group of girls, boys, works, etc. Next is bibliography. संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भित पुस्तकों की सूची. A list of the books referred to in a scholarly work. Next is bibliomania, किताबों के लिए पागलपन. Preoccupation with the acquisition and possession of books. Next is bibliophile, पुस्तक प्रेमी. A person who loves or collects books. Next is bicentennial, 200th एनिवर्सरी, 200 सालों का. नेक्स्ट इज बाइनियल, द्विवार्षिक, a thing which happens every 2 years. नेक्स्ट इज बायगॉट,
कट्टर व्यक्ति, a person who is intolerant towards those holding different opinions, one who has narrow and prejudiced religious views. Bilingual, द्विभाषिक, a person who can speak only two languages. Bi-monthly, द्वैमासिक, twice a month. Next is biodegradable, प्राकृतिक तरीके से सड़नशील, capable of being decomposed by biological agents, especially bacteria. Next is biography, जीवनी, the story of a person's life written by somebody else. Next is biology, जीव विज्ञान, study of living organism. Next is biopsy, जीवित ऊतकों की जांच. The removal of tissues from the body of somebody who is ill and its examination to order to find out more about the disease. Next is bizarre, vichitra, very strange or unusual. Next is blasphemy, ईश्वर की निंदा, word uttered impulsively about God, the act of speaking irreverently about scared thing. Scared means पवित्र, ठीक है. नेक्स्ट इज ब्लीड, ब्लीड मीन्स में आना, भेड़ बकरी या बछड़ी की आवाज, द साउंड मेड बाय शीप. अब ये ब्लीड जैसे आपका है ना, ये रीजनिंग में भी आ जाता है मिलाने के लिए कि कौन से वर्ड की कौन सी साउंड होती है, कौन से एनिमल की कौन सी साउंड होती है, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए. नेक्स्ट इज बोयर, दक्षिण अफ्रीका डच या डच वंशी, अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच descent. Next is Bohemia, रूढ़िमुक्त, one who does not follow the usual rules of social life and unconventional style of living. Next is bombard, बौछार करना, subject someone to a continuous flow of question, criticism or information. Next is bombastic, बड़े बड़े शब्दों वाला, using high sounding words but with little meaning. Next is bonfire, अलाप, huge fire for celebration. Next is bonsai, उथले बर्तन में उगी झाड़ी की किस्म, dwarf varieties of trees and shrubs. Next is bonus, अधिलाभ या पारितोषिक, a sum of money added to a person's wages as a reward for good performance. Next is bookworm, किताबी कीड़ा, पुस्तक प्रेमी, an avid book reader, one who reads a lot. Next is boomerang, एक किस्म का मुड़ा हुआ बाण जो फेंकने वाले के पास लौट आता है. A hunting weapon which comes back by used by Australian Aborigines. Next is borrow, उधार लेना, to take something on loan with the intention of returning it. Next is botanist, वनस्पति विज्ञान, one who is well versed in the knowledge of plants. Next is botany, the scientific study of plants and their structure, वनस्पति विज्ञान.